Hello guys and welcome back to my channel. Let's start a new project today. आज हम बनाएंगे इस प्लाईवुड को, एक यूजलेस प्लाईवुड को कन्वर्ट करेंगे एक ब्यूटीफुल आर्ट पीस में, जो कि आप घर में कहीं भी रख सकते हैं। तो चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले हम इसे नीचे ज़मीन पर पटक देते हैं इस तरह से। उसके बाद हमें क्या चाहिए? ओके, हमें चाहिए ये गिटार। ओके, अब हम इस गिटार को क्या करेंगे, इस प्लाईवुड के ऊपर रख के इसकी पूरी आउटलाइन स्केच कर लेंगे पेंसिल से। ओके, तो ये देखिए, अभी हमने इसको अच्छे से आउटलाइन एक बना लिया है प्लाईवुड पे चारकोल पेंसिल के साथ। जैसे कि आप देख सकते हैं आउटलाइन काफ़ी अच्छा बना है। थोड़ा बहुत दिख रहा है, थोड़ा नहीं दिख रहा है, प्लीज़ मैनेज। ये काफ़ी अच्छा है। चलिए अभी आपको रख देते हैं वापस और बाकी काम स्टार्ट करते हैं, जो कि है आउटलाइंस को थोड़ा और डार्कन कर लेते हैं स्केल से और थोड़ा अच्छे से, है ना। ओके, तो आउटलाइन हमने डार्कन कर लिया है। अब है नेक्स्ट स्टेप। तो नेक्स्ट स्टेप क्या था साला, अभी तो याद था, अभी याद नहीं आ रहा है, कहाँ चला गया इसमें वापस आके ना था। क्या था नेक्स्ट स्टेप? अच्छा हाँ, याद आ गया। नेक्स्ट स्टेप था, अभी हम जहाँ जहाँ पे आउटलाइन किया है उसके इंटीरियर्स में डक टेप या ये जो ब्राउन टेप आप जो देख रहे हैं, इसको काट के लगा दूंगा। सो दैट क्या होगा कि जब हम पेंट करेंगे तो गिटार के इंटीरियर्स पोर्शन पे थोड़ा भी पेंट ना आए और हमें एकदम फिनिश, अच्छी फिनिशिंग वाली लुक मिले। तो वही अभी मैं कर रहा हूँ। ओके, आप एंजॉय कीजिए ये म्यूज़िक। How's this so far? Looking good. Only this part is left, which we will do tomorrow. So let's take a break because the paint is finished. We're back for now. So आज हम करने वाले हैं इसका पील ऑफ। पेंट कर दिया है, पेंट सूख चुका है और इसको निकाल देते हैं। लेट्स सी।
Time for some fun facts. The length of this video is only 11 minutes, but in order to create and paint this masterpiece, it took me around 187 minutes of hard work. So I guess एक लाइक तो बनता है बॉस इस बात पे। एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दो और शेयर करो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ सो दैट अगर उनके पास भी फ्री टाइम है, अगर आपके पास भी फ्री टाइम है तो आप उसे इन अ बेटर वे यूज़ कर सकते हो। I hope to inspire at least a few, if not many people. So thank you. See you next time. Bye bye. मैं हर रोज रात को ही करता हूँ। It is a challenge. Let's do it, Mike. भाई नाक वाक टूटा तो ले जाना हॉस्पिटल, ठीक है? दस हो गया टी शर्ट ऊपर रखने में। कैसा सही है? ठीक ठाक है जैसा